Did you wear it? Did you? Okay. Helen Keller ने कहा था, life is a daring adventure or nothing. So are you guys ready? क्या आप तैयार हैं? So fasten your seat belt because Suvam Shaw Vlogs are about to begin and I'm gonna take you to the journey of Spiti Valley. And look at that! Ain't it amazing? So let's go! 22 घंटे 22 hours. तो इस कहानी का वर्णन अपने एक्साइटेड मी से सुनते हैं। तो भैया जी डेस्टिनेशन की ओर हम निकल चुके हैं टू दिल्ली एंड इट्स गोना बी 22 आवर्स जर्नी। सो थोड़ा लंबा सफ़र होने वाला है और मैं फर्स्ट एसी में इसलिए लिया बिकॉज ऑल द टिकट्स वे सोल्ड आउट एंड आई बुक्ड माई स्पीति वैली ट्रिप फॉर द लास्ट मिनट। सो फर्स्ट एसी, पैसे कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहे भैया और यूट्यूब से फ़िलहाल नहीं मिल रहा कुछ भी। So that's why I booked first AC. That's the reason. That's all. And it's a good experience. फिलहाल के लिए first AC में. So yeah, I'll show you on the way clips and then hopefully you like it. भटकती हुई आत्मा देखा है? देख लीजिए। हाँ, मैं हूँ वो भटकती हुई आत्मा। और क्या करे भैया, 22 घंटे हैं, आसान थोड़ी ना है सोलो ट्रैवलर की जिंदगी। दिल्ली पहुंच गए हम। अच्छा ओके, एक्साइटेड मी से सुनिए। Just reached Delhi after 22 घंटे का सफ़र। Just got a tetanus injection because finger got cut yesterday by a metal. So My dog stepped on a bee. So दिल्ली में मेरी मुलाकात होती है विभा से, जो है कैमरा शाई, और मैं हूँ बिग टाइम बुली। So कैमरा के सामने मैं उसकी मस्ती ले रहा हूँ। But jokes apart, she took me few places in Delhi and it was really cool. And we had a lot of fun that day. And as the day got over, I know you guys been waiting for this for a long time. So let the amazing journey of Spiti Valley begin. Are you guys excited? Let's go! Okay, 1, 2, 3. Tour Spiti Valley! भैया हम पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और अराउंड 10:30 अपना पिकअप पॉइंट टाइम था, बट इट इज़ गोना बी लिटिल लेट waiting. So the bus has finally arrived and then everybody is keeping their bag and let's go inside and continue the journey. She's our captain. So let's go. तो सब बस में बैठ चुके थे। अभी सबसे बस हाय हेलो ही हुआ था, ज़्यादा बातें नहीं हुई थी। सब अपने अपनी जगह पे कान में हेडफोन पहन के, आँख में पट्टी बांध के सोने की कोशिश कर रहे थे। मैं बस खिड़की बाहर देखता रहा जब तक आंखें नहीं बंद हो गई। और जब सुबह हुई ना भैया, जो नज़ारे थे अलग थे यार, देखने आपको, चलिए दिखाते हैं। तो भैया जी आफ्टर 12 आवर्स ऑफ जर्नी फ्रॉम बस वी आर फाइनली इन शिमला एंड जो इनका प्लान है वो तो है, बट आपकी जर्नी आप एक स्पेशल वे में स्टार्ट करेंगे। सो रेडी हैं आप? सो लेट्स बिगिन। Here just like you do, like you've always done. Go on and let the light in. सो आप देख सकते हो जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है सारे के हुडी आ रहे हैं, हुडी। सो ये सीन है ठंड का। तो अभी शिमला से हमने टेम्पो ट्रैवलर पकड़ा है एंड देयर 2 टेम्पो ट्रैवलर्स। सो few people are here, few people will be there, and after 2 hours we're gonna take a break and we're gonna freshen up and stuff. So 2 hours is gonna be again our bus journey. So bear with me. तो भैया जैसे मेरे एक्साइटेड मी ने बताया, शिमला से कल्पा थोड़ा सा लंबा सफ़र होने वाला है, पर पहाड़ों में सफ़र लंबे नहीं होते, मज़ेदार होते हैं। चलिए आपको इस मज़ेदार सफ़र पे लेके चलते हैं।
So the gate that you can see behind me is called Kinnor Entry Gate. So I'll show you the clips. Won't you hang round here just like you do? Like you've always done. Go on and let the light in. It's easier weather. तो भैया किन्नौर गेट के बाद हम डायरेक्टली निकले कल्पा की तरफ। रास्ते के व्यू इंसेन थे तो हमने अच्छे से पिक्चर और वीडियोस उठाए, बट बाय द टाइम वी रीच्ड कल्पा बहुत लेट हो चुका था, सो मैंने व्लॉग नहीं किया। बट सुबह के 5:30 मैंने आपके लिए अमेजिंग शॉट्स कल्पा के उठाए। सो आफ्टर दिस गेट रेडी फॉर दैट, लेट्स स्टार्ट। When I kissed you on the cheek, you said it wasn't the same anymore. Thought I felt some pain before. Come on and let me in. Let's go on and start again. I'm gonna show you something really, really heavenly and godly. So, if you can see that sunlight, yeah, that sunlight is falling. The rays are falling directly. See, the rays are falling directly towards that temple, and that's a Buddha monastery. So you can understand how well it's designed, or I don't know if it's natural or if they planned it that well. The sunlight, the first sunlight of the day will always fall on the Buddha. So yeah, that's the sunlight and that's the Buddha monastery. So yeah, it's really godly for me at least. So the next video is going to be about from Kalpa to Kaza, which is base of Spiti Valley. So yeah, we are about to end this episode 1. Await for the episode 2. Suvam Vlogs out. एक ब्लॉग के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।